So good morning everyone. So today we'll discuss about the second chapter of plus 2 physics, that is vectors. So what are scalars and vectors? Basically the scalars are quantities which possess only magnitude, or the quantities which require only magnitude for their complete specification. Like mass, the examples of scalar quantities are mass, length, volume, density, energy, temperature, charge, electric potential. So these quantities are called scalar quantities. There are n number of quantities in physics which requires only magnitude for their definition or complete specification. Okay, so vector, the quantities that possess both magnitude and directional property. Okay, so like displacement, distance mane kono, distance mane suppose one point ru e point ko ame jiba through various routes, eita ko ame kahiba distance, but displacement katha jetale asi jaye, so whenever we are considering a particular direction, that is a straight line path, so in that case displacement is called as a vector quantity. Velocity, similarly, what is the velocity of the body at a particular direction, say katha asjaye force, acceleration, electric field. So there are many infinite number of quantities in physics will come across, so those are called vector quantities. Okay, so we'll discuss the properties of vectors in elaborate manner. So let us see what are the vector addition rules. Okay, the one of the rules is triangle law of vector addition. So let us consider this is a point O and A. Okay, this is a vector. So this point is generally called as head of the vector. Okay, and this arrow mark symbol जो पट थिबो सेटा को हमें कहबा tail of the vector. Okay, so tail of the vector. So similarly, see the in this figure. So there is a point. Let us consider this is O. Okay, so O is the head and B is the or A is the head and B is the tail. AB. There is a vector called AB where A is the head and B is the tail. And similarly, from this tail, one another vector originates like B and C. Okay, so B is the head and C is the tail of the vector. So the triangle law of vector addition says, okay, the rules of the triangle law of vector addition is when A plus B we want to add, suppose the vectors A and B. So the resultant direction of this resultant, that means after addition, the direction of the resultant vector will be suppose gote head ru arambha haba and gote tail re saribo. Okay, so this suppose resultant R is equal to A plus B. ता अर्थ देख गोटे हेड रे आरंभ होला, गोटे टेल रे सरला गोटे वेक्टर, and another vector originates from the tail and ends at certain point. So the resultant addition of the A plus B केमती हवा, केमती लिखिबा. So गोटे हेड रू आरंभ हबो, गोटे वेक्टर रो हेड रू आरंभ होइथिबो, गोटे टेल रे जतेले सरीबो तेबे जाई कि हमें कहि परिबा एटा गोटे A plus B रो एडिशन हमें कहि परिबा. ओके, सो आमे देखिबा सपोज ओ ए एंड ओ बी एमती दुईटी वेक्टर अछि, एटा को आमे केमती ऐड करिबा. सो सपोज एठी गोटे पैरेलल लाइन एमती ड्रा करिबा, ओ बी रो गोटे पैरेलल लाइन एमती हमें ड्रा करिबा. सो एठी हमें रिजल्टेंट पुणी एमती केमती कैलकुलेट कर परिबा. सपोज दिस इज ओ ए एंड एटा होची ए एंड बी, let it be a and b. Okay, so this case the addition of the vectors will be, the direction of the addition of vectors will be in this direction. माने गोटे हेड रे आरंभ होला and गोटे वेक्टर रो टेल रे सरीबो. ओके, सो सिमिलरली देखिबा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन रो कोन कोन प्रॉपर्टीज अछि. सो ए बी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू ए सी, जेमति एटा मु कहली. And or you can write, suppose a vector na ame daba small a and a vector na daba small b. So a plus b is equal to nothing but c vector or resultant vector ame koi periba. So find out the correct method of combining or adding vectors. ame eti gote problem dekhiba. So let us consider a diagram. Okay, so ଏଠି ଗୋଟେ vector ଅଛି ax ଏପଟ direction ରେ and ଗୋଟେ vector ଅଛି ay डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन रे. मु कोन कहितली गोटे रिजल्टेंट हवा पई, रिजल्टेंट गोटे वेक्टर रिजल्टेंट सैटिस्फाई हवा पई, सो ये गोटे हेड रे आरंभ होइतिबा दरकार, गोटे टेल रे सरितिबा दरकार. ओके, बट एठी देखो एटा होची गोटे टेल and here it is also one tail. So this configuration
will we cannot say this resultant is the a plus b or ax plus ay, we cannot say. Similarly, this is not the correct method, so I have given a cross symbol here. So similarly, let us see here. So ax again in this direction, ay in this direction. What is the resultant vector given? A vector is the resultant vector given here, but here it starts from tail and ends at another tail. So this is again a wrong configuration. So similarly, let us see here. Here one vector is in this direction and ay is in this direction. Okay. So resultant vector starts from the head. Okay, this is the head point of this ax vector, but ends at tail point of this ay vector. So this configuration can be called as a correct configuration of adding two. So similarly in the figure D here, so it gote vector अछि ay, eta तଳ direction रे एमते अछि, तापरे ax इठु गोटे tail रू आरंभ होइछि, पुनी गोटे ए सॉरी हेड रू आरंभ होइछि, गोटे tail रे सरिछि, that is ax. But resultant vector मु कहिछि कोन जे गोटे हेड रू आरंभ होइतिबा दरकार and tail रे सरिथिबा दरकार. So this is the correct way of representing or adding vectors. Okay. So similarly in the figure E हमें देखिबा. So एठी गोटे वेक्टर अछि ax जोटा आरंभ होइछि हेड तापरे टेल, तापरे से टेल रु पुनी आ गोटे वेक्टर ay ओरिजिनेट हैला, बट रिजल्टेंट वेक्टर हेड रु आरंभ होइथिबा दरकार. बट हियर देखो एठी रिजल्टेंट वेक्टर हेड रु आरंभ होइकि टेल रे सरथिबा दरकार. सो एटा मु बारंबार कहूची जे गोटे रिजल्टेंट वेक्टर गोटे हेड रु आरंभ होबो एंड टेल रे सरिबो. So like this, okay, एटी देखो a b वेक्टर रे a रो हेड रु आरंभ होइछि and c माने b c रो टेल रे सरिछि. ओके, बट हियर इन दिस पॉइंट एटी देखो टेल रु रिजल्टेंट वेक्टर आरंभ होइछि. सो दिस इज नॉट द correct way of representing two or adding two vectors. Similarly in the figure F हमें जो देखिबा, so here is a vector called ax and here is a vector called ay. मु जेमति कहली जे आमे कोन कर परिबा, गोटे पैरेलल लाइंस ड्रा कर परिबा. तो सेटा को कहा जाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, सो ट्रायंगल लॉ रो जस्ट माने एक्सटेंडेड वर्जन टा को हम कहू पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, सो सेमती आमे एठी गोटे पैरेलल लाइन ड्रा कले जार की डायरेक्शन एपटे एंड सिमिलरली ax रो डायरेक्शन आमे एमती देई परिबा. ओके, सो एई केस रे कोन होउची, सपोज आमे गोटे भी जदी पैरेलल लाइंस आमे ड्रा करूची, suppose let it be this is a y. Okay, so let this line be, this dotted lines be a y. So resultant vector मु कोन कहितली, so resultant vector सब बेले गोटे हेड रो आरंभ होबो and tail रे सरिबो. So देखो ए ax and ay भितरे जदी गोटे हेड रो आरंभ होला and tail रे सरची, so this is the correct way of representing two vectors. Similarly तार resultant आमे जदी देखिबा गोटे दीटी वेक्टर अछि oa and OB, जार की suppose this is A vector and this is let it be B vector जदि हम एमती देखिबा and दी जन को भितर जदि एंगल होची थीटा. ओके, सो आमे केमती लिखि परिबा, एठु गोटे मनकर आमे परपेंडिकुलर आमे लाइन ड्रा करिबा. सो in this by this Pythagoras theorem आमे जो जानिछे मैथमेटिक्स रे, Pythagoras theorem यहाँ अनुसार गोटे राइट एंगल ट्रायंगल रे कोन हे जिवो resultant vector जदि हमें देखिबा. So resultant will be a square plus b square plus 2ab cos theta हे जिवो and resultant is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta रो root over हे जिवो. Okay, so suppose this is there are two vectors oa and ob. तो similarly हमें गोटे corresponding हमें एमती parallel lines जेमती ड्रा करूचे. Okay, so एई वेक्टर टा suppose दी जनकर resultant हैला. तो सिमिलरली ए जो रिजल्टेंट आउ ए वेक्टर भितरे एंगल सपोज बीटा अछि एंड दीटा वेक्टर भितरे जदि एंगल थीटा अछि, सो एटा जस्ट हमें पाइथागोरस थ्योरम अनुसार ए रिजल्टेंट वेक्टर रु हमें गोटे परपेंडिकुलर ड्रा करबा. तो सेही हिसाब रे हमें रिजल्टेंट टा एठी एमति पाउचे कोन ना ए रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सिमिलरली जदि दीटा ए जो रिजल्टेंट आउ ए वेक्टर भितरे एंगल अछि बीटा, so beta will be equal to tan inverse b sin theta divided by a plus b cos theta. ये दीटी important mathematical formula एटा को हमको मन रखियो पड़िबो. so विभिन्न केस आसीबो. so case 1, suppose theta होची 90 डिग्री, माने दुईटी वेक्टर मनकर अछंती, this is a vector and this is b vector
Okay, so this is a vector and this is b vector. So दी जनक भितर मनकर एंगल होची 90 डिग्री, तो सेही केस रे कोन हे जिवो cos थीटा टा हे जिवो 0. ओके, सो cos 90 is equal to 0. So resultant कोन हे जिवो root over of a square plus b square plus 2ab into 0. ए टर्म टा कैंसल आउट हे जिवो, एटा हे जिवो 0. So that will be equal to root over of a square plus b square resultant vector. So बीटा सेमती हे जिवो, ए जो फार्मूला हमें लिखिले b sin थीटा डिवाइडेड बाय a plus b cos थीटा, से हिसाब रे जदी b sin थीटा माने sin 90 ए केस रे हे जिवो sin 90 is equal to 1 plus a plus b cos divided by a plus b cos theta, ए टर्म टा हे जिवो 0. So that will be equal to tan inverse b by a. Okay, theta is equal to 0 degree, cos theta is equal to 1. So resultant will be root over of a square plus b square plus 2ab cos theta जगह एठी 1 पडिवो. सो सेति पई दीटा जाक कोन हले पैरेलल, माने जेतले थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दुईटी वेक्टर एठी पैरेलल वेक्टर्स हमें कहि परिबा. एंड व्हेन टू पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन द मैग्नीट्यूड्स आर सेम, माने दी जनकर डायरेक्शन सेम हेतिबो 0 डिग्री तांको भीतर थिबो एंड मैग्नीट्यूड जदि समान रहबो. सो पैरेलल टू पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल when their magnitudes are same. So similarly beta will be equal to tan inverse b into 0 he jivo kaina sin 0 is equal to 0. Okay, divided by ab mane ethi he jivo tan inverse 0 is equal to 0. So beta will be 0 for parallel vectors or equal vectors you can say. So resultant ethi jo root over of a square plus b square plus 2ab hame likhile taku emti bi likh periba. Resultant will be equal to eta कार formula a plus b ro whole square formula or equal to you can write a plus b, जोटा हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रे देखिले जदी two vectors. Okay, so that you can write if two vectors are parallel vectors, so resultant will be equal to a plus b. So a plus b hela, so resultant vector एठी जेमति मु सिंबलाइज करछि resultant vector को एटा गोटे बडो वेक्टर हे जिवो, ए दी जन जाक मिसी जिवे at a particular direction. When theta is equal to 180 degree, that means गोटे वेक्टर इठी अछि एमति जाउछि राइट साइड डायरेक्शन एंड similarly corresponding आ गोटे वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड रे जाउछि. सो दी जन को भितर एंगल होछि 180 degree. So in that case you can say root over of a square plus b square minus 2ab हिटी जिवो. So root over of a minus एटा होछि a minus b रो होल स्क्वायर फॉर्मूला. So resultant will be equal to a minus b. So beta will be equal to tan inverse 0. So equal to 0 again. Okay, let us consider there is a vector a and there is a vector b. Okay, so empty directions रे अछंती तो मु कोन कहितली. So suppose let us take a origin here. So how to add these two vectors? So either in this direction किंबा downward side रे हमें गोटे parallel corresponding ताकू कोन करबा गोटे वेक्टर ड्रा करबा. ओके, so similarly इठी आर पैरेलल कंपोनेंट सेम हे जिवो, किंतु जेहेतु कि ऊपर साइड टा जदी हे जिवो b वेक्टर. ओके, सो तळ साइड टा हे जिवो माइनस b वेक्टर. काइना गोटे ओरिजिन सपोज हमें कंसीडर करूचे तार राइट साइड जदी हे जिवो प्लस सिंबल एंड लेफ्ट साइड टा हे जिवो सिमिलरली कॉरेस्पोंडिंग जदी लेफ्ट साइड टा हमें देखिबा दैट विल बी माइनस डायरेक्शन, माने तार ऑपोजिट डायरेक्शन हे जाउची. सिमिलरली ऊपर साइड टा हे गेला पॉजिटिव डायरेक्शन एंड तळ साइड टा हे जाउची नेगेटिव डायरेक्शन. So in this case हमें जदी देखिबा एटा गोटे पैरेललोग्राम हिसाब रे हमें ड्रा कर परिबा. तापर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पकेगी जदी रिजल्टेंट वेक्टर हमें कैलकुलेट करिबा. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर कोन कहितली गोटे हेड रु सब बेले आरंभ होबो एंड टेल रे सरीबो. So in this case you can say एटा होची तमरो a vector and since it is going to the positive side a vector टा होची तम हमरो कोन पॉजिटिव वेक्टर. ओके, a minus b vector he jivo. So resultant, this resultant vector will be a minus b vector. Okay, so similarly resolution of vector into components, जेतले गोटे वेक्टर अछि तार दुईटी कंपोनेंट सब बेले हमें कैलकुलेट कर परिबा. So let us consider op be the vector. Okay, o होची तार हेड and p होची तार टेल. Okay, so this is let this vector is r vector. Okay, so ei vector taku ame component हिसाब रे ताकू भांगी परिबा, दीटा component कर परिबा. So let us draw perpendiculars from this point p towards the x axis and let it be this horizontal axis and say p ru out गोटे perpendicular ame draw करिबा vertical axis को. Okay, so जदी ame तापरे कोन करिबा, suppose cos theta ame बाहर करिया पई चाहूचे.
cos theta जदि आमे बाहर करिया पई चाहूचे राइट एंगल ट्रायंगल रे सो दिस इज द बेस माने rx एटा को जदि आमे rx बोली एठी कंसीडर करचे सो दिस इज द बेस सो rx डिवाइडेड बाय कोन हे जिवो हाइट और hypotenuse जदि हम देखिबा base by hypotenuse so base by hypotenuse will be r vector hypotenuse time already they neche r vector so cos x cos theta is equal to r x divided by हमें capital R एमती लिखि परिबा so हमें कौन लिखि परिबा r x will be equal to r cos theta so माने x component किंबा horizontal component टाको हमें सब बेले लिखि परिबा r cos theta similarly sin theta को हमें लिखि परिबा कोन sin theta will be equal to ry divided by r okay perpendicular by hypotenuse similarly ry टाको हमें एमती लिखि परिबा ry will be r sin theta so these r cos theta and r sin theta or rx and ry are called as two mutually perpendicular direction components you can say the components the x and component y components or horizontal and vertical components of a vector so this component resolution mane eta sabu bele physics re amaro use hobo any chapter you go to electrostatics you go to laws of motion joti vector ra concept asibo sethi amaro amaro rx components ry components kimba x component y component horizontal vertical components ra concept so if a rule हिसाब से देखिबा हमें जदि a vector is given माने a vector जो values किंबा magnitude given and theta is given okay so we can find out कोटे vector जदि vector जदि तार data देइछि so we can find out the x component and y component according to the equation a vector will be equal to root over of ax square plus ay square we can find out okay so by looking at this diagram we can find out from this diagram and similarly theta will be equal to tan inverse ay by ax mane base perpendicular divided by base okay so either of the two cases हमको जेतले problem solve करिवा हमें किंबा विभिन्न case study जेतले करिवा so in that case I will see that the vector देछि एवं angle देछि so we can find out the components and जदि components देछि हमें resultant vector ଆଉ angle between the two vectors हमें we can two components we can calculate it और केते angle रे से vector टा bend ହେଇछि so that we can calculate so similarly is vector components रो केते गोटे basics अछि मु कहबी so suppose there is a x and y axis here suppose let it be x axis and this vertical axis is y axis so it has the origin so it has positive x axis right hand side and left side is minus x similarly downward side will be minus y and upper side is plus y okay so let this vector be the r vector okay or you can say the resultant vector and eta x axis सहित theta angle रे जदी ए वेक्टर टा अछि माने पॉजिटिव x axis सहित theta angle रे अछि सो ए फर्स्ट क्वाड्रेंट हमकु सब बेले हम मैथमेटिक्स से जानचे जो एमती गोटे हम x y कंपोनेंट्स जदी हम करिवा सपोज x y axis ड्रा करिवा so this is first quadrant this is second quadrant this is third quadrant and this is fourth quadrant okay so first quadrant रे 0 माने एटा होची 0 डिग्री let us consider less than theta माने and less than 90 degree okay so theta टा सब बेले 90 डिग्री भितरे रहइबो फर्स्ट क्वाड्रेंट रे गोटे वेक्टर जदी हम ड्रा करबा फर्स्ट क्वाड्रेंट रे so ए केस रे कोन हे जिवो rx will be positive and also ry will be positive माने x component टा भी positive रहइबो y component टा मध्ये positive रहइबो similarly एठी जदी सेकंड क्वाड्रेंट रे देखिबा हमें so एठी जो रिजल्टेंट एठी गोटे वेक्टर हमें एठी ड्रा करछे r वेक्टर एठी so सेकंड क्वाड्रेंट एटा ओके so सब बेले गोटे रूल्स मन रखिया पड़िबो सब बेले जतले हमें थीटा कंसीडर करूचे so रिजल्टेंट रो ए नेगेटिव x एक्सिस सहित एटा होची -x so नेगेटिव x एक्सिस सहित जदी एंगल होची थीटा हमक सब बेले गोटे वेक्टर रो पॉजिटिव x एक्सिस सहित गोटे वेक्टर पॉजिटिव x एक्सिस सहित केते एंगल रे रहउची सब बेले सेटा हमकु कंसीडर करियो पड़ियो सो ए दुई जनक भितर जदी एंगल थीटा ए नेगेटिव x एक्सिस एंड
resultant भितरे किंतु हमको पॉजिटिव सहित जेहेतु कि तुलना करिया पड़ुची सो इन दैट केस वी हैव टू राइट 180 डिग्री माइनस थीटा काहेकि कहीं टोटल टा होची स्ट्रेट लाइन टा होची 180 डिग्री सो एठी जदी हमें ड्रॉ एटा टोटल जदी 180 डिग्री सो एटा जदी थीटा हे गेला एतिक एंगल सो दिस विल बी 180 माइनस थीटा तो सिमिलरली हमें हमको एठी r x जगह रे जो r cos थीटा हमें पकोउतले r x विल बी r cos 180 minus theta so cos 180 minus theta जदी हमें करिवा that is equal to minus cos theta so एठी हे जीवो rx will be minus r cos theta and ry is r sin 180 minus theta that is equal to r sin theta so in this case rx is negative second quadrant रे and ry will be positive okay so similarly in the third quadrant these जन जगह दीटा components हे जिवे negative rx is negative similarly ry will be negative okay similarly in the fourth quadrant rx टा हे जिवो ए right hand side direction को and ry will be माने towards the downward side direction or you can say that rx is positive and ry is negative so these are some of the basic rules of vector addition the resolution of vector into components and what we need to consider while solving such type of conditions जे फर्स्ट क्वाड्रेंट रे अछि कि सेकंड क्वाड्रेंट रे अछि आ हमको सब बेले कंसीडर करियो पड़िबो पॉजिटिव x एक्सिस सहित गोटे वेक्टर केते एंगल रे अछि ओके सो नेक्स्ट क्लास रे किमा नेक्स्ट वीडियो रे मु कहिबी vector law of multiplication okay so what are the laws of vector multiplication we will discuss okay so thank you for today's session if you want more videos like this please subscribe this channel thank you